Good morning, students. So we are doing chapter 10, human settlements. We have discussed about the introduction of human settlement, then we have discussed the factors of human settlement, then we have discussed about the plant settlement. So today we will discuss about the rural settlement patterns. Patterns means the shape of the rural settlement we will discuss today. We will discuss about the पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. पैटर्न यू नो वेरी वेल, शेप जो बोलते हैं उसको वो करें. सो फर्स्ट इट इज़ गिवन रूरल सेटलमेंट पैटर्न रिफ्लेक्ट द वे द हाउस आर साइटेड. नाउ two words are given in your book. One is site and second is situation. Site and situation. There is a difference between these two words in your NCERT question also. The difference is asked about these two words. Site, the place where people are living, that is called site. यानी जहाँ पे लोग रहते हैं वो site है. Situation, the place where people are living, which are the factor responsible for living the people in that area. The factors like water supply or the other facilities which are required, these are called situation. It means the place where people living, that is called site, and the factors which are responsible for the living of people in that particular area, that is called situation. So this is the difference between site and situation. Remember this. Reflect the way the house are sited. Pattern reflected the houses, how they are living in that area. Site of the village surrounding influence shape and size of a village. Now next is given classification of rural settlement based on the some particular point. First is given in different areas there are different methods. For example, plain area there are different way, different pattern you will find. Plateau, coastal villages. So first we will discuss about the functions what they are doing. Mainly in the plain area, the people those who are living, they are doing farming. People those who are living in the coastal areas, they are doing the fishing and these works. So this is the functions of the rural settlement, people those who are living. Now we will discuss about the shapes. First is given linear pattern. Linear you can remember with the words line. It means the houses which are in the lines, that is called linear pattern. These are found near the road or railway line or river, or you can say canal. This is the example of linear pattern. You can see in this houses are built on the both side of the roads. You can call it road also. It is also an example of canal also. So such type of pattern is called linear pattern, that is shown in this. Second is given rectangular pattern. Rectangular patterns are found in plain areas. Roads are rectangular and cut each other at the right angle. Rectangular shape you know very well, the sides of the एंगल इज सेम, यानी दोनों साइड्स आमने सामने वाली जब सेम होती है उसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं, आयत जिसको बोलाते हैं. सो सच टाइप ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन द प्लेन एरियाज. दे आर फाउंड इन द प्लेन एरियाज. रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर. रोड्स यहाँ पे क्या होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे और एक दूसरे को कट करेंगे राइट एंगल के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर. तो वहाँ पे जो हाउसेज बनाए जाएंगे दैट विल बी द रेक्टेंगुलर शेप. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है, दैट इज शोन इन दिस. दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप. यू कैन सी दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप. दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर. यू कैन सी द हाउस इज इन द रेक्टेंगुलर शेप. This is also the example of rectangular shape. It means this is the example of rectangular shape. Then next is given about the, these are the shapes given about the examples of these patterns. Next the example which are given in this, that is the linear pattern we have discussed. This is the linear pattern. Then next is given cross shape pattern. क्रॉस शेप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे चौराहा होता है. यू नो वेरी वेल, दे वेयर 4 रोड्स आर मर्ज विथ ईच अदर और दे आर मीट विथ ईच अदर. तो दैट इज द क्रॉस शेप पैटर्न. द हाउसेज विच आर बिल्ट लाइक दिस, दिस इज द वन रोड. One road is this, one road, second, third and fourth. Cross it is also called plus, like Christians में जो cross होता है वैसे ही. The houses are built on the all 4 sides of the roads, that is called cross shape pattern. This is called cross shape pattern.
Next is given star like pattern. Star like pattern means so many roads come and meet with each other in the particular area, so that is called cross shaped area. Star like pattern, you can see this is the shape of the star, so many roads are coming from so many sides, so that is called cross shaped pattern. Sorry, star like pattern. Star like pattern is this, so many roads are coming cross, there are only 4 roads. Star like pattern where so many roads meet with each other in a particular area and the houses are built near these roads, so that is called star like pattern. Next is given T shape pattern. T shape means one main road is there, then some minor road, link road are diverge from that particular main road. जैसे मेन रोड से एक आपका डाइवर्ज होगा रोड और वो दूसरे साइड में चला जाएगा, तो दिस इज द शेप ऑफ टी. Such type of houses are also built, so these are the houses and then these are the houses in this side, so this is the T shape pattern. Now next is given circular pattern. Circular pattern means the houses which are built near a particular circular thing. जैसे ये pond हो गया, for example this is the pond and the houses are built near this, around this particular pond. जैसे एक pond है उसके चारों तरफ क्या है आपके हाउसेज बना दिए, उसको सर्कुलर पैटर्न बोलते हैं. सम इन द एंशियंट टाइम पीपल वर बिल्ट दिस एरिया फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी इस एरिया में डोमेस्टिक एनिमल को रखते थे और चारों साइड में घर बना लेते थे, सो दैट दे विल बी सेफ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. यानी पुराने समय में लोग हाउसेज को अपने इस तरीके से बनाते थे कि बीच के अंदर डोमेस्टिक एनिमल्स को रख सकें और बाहर की तरफ घर बना लें, जिससे क्या है कि जो बाहर के वाइल्ड एनिमल्स है वो डोमेस्टिक एनिमल्स को हार्म्स ना कर सकें. इन साउथ इंडिया pattern is this, they will make the temple in this area and the house is built near this particular shape. यानी यहाँ पे टेम्पल बन गया, इसके चारों साइड में घर बना लिए, तो ये सर्कुलर पैटर्न हो गया. इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न भी बनाया जाता है. सो दिस टाइप ऑफ पैटर्न आर फाउंड. नाउ नेक्स्ट इज गिवन डबल पैटर्न. ये सर्कुलर पैटर्न में आपने हमारे यहाँ पे भी घर देखे होंगे, बीच में चौपाल होती है या सरपंच का घर हो जाता है, उसके चारों तरफ में फिर बड़े घर, फिर उसके बाद में आगे नेक्स्ट. इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न में कई चीज़ें मिलती है आपको. Then double pattern means there are any road or canal or river and the villages are built set up in the both sides. यानी दोनों साइड्स में अलग अलग विलेज सेटअप कर दिए जाते हैं, उसको डबल पैटर्न बोलते हैं. जैसे अगर आप आदमपुर के पास जाते हो तो वहाँ पे 2 विलेजेस है, वन इज़ खारा बरवाला एंड सेकंड इज़ किशनगढ़. सो देर इज़ ओनली वन रोड बिटवीन देम एंड दे आर इन द बोथ साइड्स, 2 विलेजेस आर देयर. एंड इन द रिवर्स, जहाँ पे रिवर्स के दोनों साइड में है उसके ऊपर क्या होता है, एक ब्रिज बना होता है टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बोथ विलेजेस. यानी अगर इस विलेज के लोगों को इधर आना है उधर जाना है तो उसके लिए ये इन चीज़ों का यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द डबल पैटर्न. डबल पैटर्न मीन्स व्हेन 2 विलेजेस आर बिल्ट सेटअप नियर द रिवर, अलोंग द रिवर, यू कैन से रिवर के दोनों साइड में वो बन जाते हैं और दोनों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए ब्रिज वगैरह बना लेते हैं, तो वो होता है डबल पैटर्न. It is called double pattern. So today we have discussed about these patterns: linear pattern, cross shape pattern, star like pattern, T shape pattern, circular pattern and double pattern. You have to remember these diagrams because sometimes in question exam this is asked ki which type of pattern is this, so you have to remember this. Mainly problem is created when cross shaped and rectangular pattern is asked. So cross shaped and rectangular both are same. क्रॉस और रेक्टेंगुलर को सेम ही माना गया, इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट रिमेनिंग आर डिफरेंट. सो रिमेंबर दिस थिंग. इफ दिस इज आस्क्ड यू विल से डबल पैटर्न. इफ इट इज आस्क्ड सर्कुलर पैटर्न, इट इज टी शेप पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न. दीज आर द डिफरेंसेज इन दिस पैटर्न. सो रिमेंबर दिस पैटर्न properly. So today we will discuss only this. You have to remember this in your notebook. You can prepare this diagram also so that you can remember the things. So today we have discussed about the rural settlement patterns. So you will revise this and write down in your notebook. Thank you. Have a nice day.